Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about a systemic fungus, which is Histoplasma capsulatum. And the scene is of that of a historian's cave. Basically हम transmission से start करते हैं. इसकी जो transmission है that is by the inhalation of bat or bird feces. Splunker's disease, it can be a chicken farmer. ठीक है, और आपको कोई इस तरह का सिनेरियो आ सकता है दैट देयर वाज अ पर्सन हु वेंट ऑन अ लोकल हाइकिंग ट्रिप दैट इंक्लूडेड केव्स. ठीक है, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ रैशेस, वॉमिटिंग और डायरिया, एंड अ चेस्ट रेडियोग्राफ इज शोइंग पैची पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स एंड हाइलर lymph adenopathy. A sputum sample under the microscope shows macrophages with intracellular yeasts. So what is the likely systemic mycosis infection that this patient has? So that is histoplasma. अब हम थोड़ा सा इसको देखते जाते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से एरियाज़ के अंदर ये इंडेमिक है. सो इट इज़ मोस्टली इंडेमिक इन द मिड वेस्टर्न एंड द सेंट्रल यूएस अलॉन्ग द मिसिसिपी एंड द ओहियो रिवर वैलीज़. ठीक हो गया. उसके बाद हमने ट्रांसमिशन ऑलरेडी पढ़ ली, दैट इट्स ट्रांसमिशन इज़ वाई द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय द इनहेलेशन ऑफ द बर्ड और द बैट फीसेस. ठीक है, और वो हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं फ्रॉम द हिस्टोरियन हु इज़ एक्चुअली कफिंग. ठीक हो गया. फिर उसके बाद ये जो कनेरी है दैट इज़ एक्चुअली रिमाइंडर अबाउट द केव के लोग जो हैं वो कनेरी को साथ लेके जाते थे. एंड इफ़ द कनेरी डाइज इट मीन्स दिस प्लेस इज़ नॉट सूटेबल फॉर देम टू स्टे. एंड दिस कनेरी इज़ ऑल्सो मेकिंग अस रिमेंबर अबाउट द मैक्रोफेजेस विच आर जिनके इंट्रासेलुलरली मैक्रोफेजेस के अंदर आपका फंगस रेप्लिकेट कर रहा होता है. सो जब हम उसको हिस्टोलॉजिकली देखते हैं तो वी सी दैम एज दीज टू पटल्स, जिसमें ये बेसिकली ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑफ दैट ऑफ द मैक्रोफेज, एंड यू कैन सी मल्टीपल इंट्रासेलुलर ओवल बॉडीज़. एंड सिंस मैक्रोफेजेस आर ऑलमोस्ट और द साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल, इसका मतलब ये है कि जो यीस्ट है दैट इज़ मच स्मॉलर देन अ रेड ब्लड सेल. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है? दैट इज़ टू डिफरेंट सीरम्स. इट कैन बी द सीरम ऑफ योर ब्लड, ठीक है, विच कैन ठीक है, और इट कैन बी अ यूरिन सैम्पल. ठीक हो गया. और यूरिन एंटीजन टेस्ट, अ रैपिड सीरम और अ यूरिन एंटीजन टेस्ट. इट कैन ऑल्सो बी वाया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्किन स्क्रैपिंग्स और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्क्रैपिंग्स ऑफ द एरिया विच इज़ इन्फेक्टेड, प्रॉबेबली क्योंकि इसमें लंग्स इन्फेक्टेड है. So you can actually take the sample or biopsy and you can observe it in a potassium hydroxide preparation. ठीक है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि it is a dimorphic which can be remembered from this butterfly, which means that it is actually a yeast in the human body and in the cold atmosphere it is a mold. ठीक है. ओके, what are the manifestations of histoplasma? It causes pneumonia. And it causes granulomas to form inside the lung. So this can be remembered from this lung diagrams shown here, and these are actually representative of the multiple calcifications. So there are granulomas, okay, and which look like TB calcified nodes, and there are nodules in the hilar region. So this is actually the nodules or lymph adenopathy in the hilar region, and these are actually the calcified nodes, and these calcified nodes are much like TB, so we have shown a TB plant over here. The next thing is that one of the representations, अभी हमने pneumonia पढ़ लिया और granulomas पढ़ लिए, which look like calcified nodes, and there are nodules in the hilar region. There's another point, another manifestation is actually the erythema nodosum. So these are long legs and they have nodular patches, so that is indicative of erythema nodosum. ठीक है. Another manifestation that we'll be remembering from this cow here, that it causes a disseminated trouble to your liver and your spleen. Why to the liver and spleen, and why is it that in every other scenario we see that there's hepatosplenomegaly? So उसकी वजह ये होती है कि ये जो organism है that is replicating inside the macrophages and in the reticuloendothelial system that has a lot of macrophages that are prevalent in the liver and spleen. So that is why we see that we have got the liver and the spleen, and it's actually a disseminated infection, and that occurs mainly in the immunocompromised. ठीक हो गया. The bats are actually representative of the bird and the bat droppings that actually cause this kind of an infection. The treatment to this infection is by the use of azoles, which can be remembered from these pine cones. And we can also use another thing. What is it? Yeah, in the case of disseminated infections we can use amphotericin B.
ठीक है. So for mild infections we can use azoles, and for systemic we can use amphotericin B.